Welcome back again to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड enhanced export credit risk insurance cover to support small exporters? ऑप्शन है आपके LIC, ECGC, PFRDA और IRDAI। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कौन से इंस्टीट्यूशन ने न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर करता है टू सपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स। LIC, ECGC, PFRDA या IRDAI? द राइट आंसर इज ECGC। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ECGC के भी नाम से जानते हैं, इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड एनहांस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर अप टू 90% to support small exporters. This cover is provided under the export credit insurance for banks whole turnover packaging credit and post shipment ECIP, WTPC and PS. The scheme would benefit small scale exporters availing of export credit with banks and to diversify their existing portfolio. Second question है, which country emerged as the top sourcing nation in FDI equity flows into India in financial year 2021 to 2022? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कंट्री टॉप सोर्सिंग नेशन है FDI इक्विटी फ्लोज में इंडिया में? सिंगापुर, USA, नीदरलैंड या UAE? कौन सा टॉप सोर्सिंग नेशन है? द राइट आंसर इज सिंगापुर emerged as the top sourcing nation in FDI equity flows into India in financial year 2021 to 2022। सिंगापुर जो है वो 27.1% FDI इक्विटी फ्लोज में हेल्प करता है इंडिया को। इट वॉज फॉलोड बाय द USA दूसरे नंबर पे है जो 17.94% है और मॉरिशस 15.98% और नीदरलैंड 7.86%। एज पर UNCTAD World Investment Report 2022, India has improved one position to 7th rank among the top 20 host economies for 2021. Third question है, which Indian company acquired stakes in Senegal based Baobab Mining and Chemicals Corporation? ऑप्शन है आपके कोरोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड या B ऑप्शन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड या C चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स या D धर्मासी मोरारची केमिकल? द राइट आंसर इज कोरोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इंडियाज लीडिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लेयर, यानी कि जो कोरोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है वो इंडिया की लीडिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर कंपनी है जिसने 45% इक्विटी शेयर बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल कॉरपोरेशन के एक्वायर की है। BMCC is a rock phosphate mining company based in Senegal. As per the Union Minister of Chemicals and Fertilizers, the investment aims to achieve supply security goal for meeting the country's fertilizer needs. Fourth question है, which institution released an article
titled Privatization of Public Sector Banks, an Alternative Perspective। किस बैंक ने या कौन से इंस्टीट्यूशन ने एक आर्टिकल लॉन्च किया है, रिलीज किया है, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नीति आयोग, द सेकंड वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या थर्ड ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फोर्थ ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। किस इंस्टीट्यूशन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव? द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India published an article titled Privatization of Public Sector Banks, an Alternative Perspective in the August 2022 issue of its bulletin. As per the authors of the article, instead of a big bang approach, a gradual approach as announced by the government would result in better outcomes. Now the fifth question is, which regulatory body has notified a framework introducing a social stock exchange (SSE) in India? First option आपका Reserve Bank of India, second Securities and Exchange Board of India which is known as SEBI, third option is Department of Financial Services, या D Economic Advisory Council। किस रेगुलेटरी बॉडी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, या डी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? द राइट आंसर इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। The Securities and Exchange Board of India has notified a framework introducing a social stock exchange in India. The new category of exchange will provide social enterprises an additional avenue to raise funds. The SSE lists non-profit organizations on stock exchanges and provides them with an alternative fundraising avenue. Now the sixth question is, Competition Commission of India (CCI) approved by the acquisition of payment gateway provider BillDesk by which company? Competition Commission of India ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ BillDesk। किस कंपनी ने BillDesk को परचेज किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेजर पे, सेकंड ऑप्शन इज पेयू, थर्ड ऑप्शन इज भारत पे, या डी ऑप्शन फोन पे? द राइट आंसर इज पेयू। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI has approved the US $4.7 billion acquisition of online payment gateway provider BillDesk by Process Back PayU India. This is the largest combination ever approved by Competition Commission of India in the fintech space. PayU, the payment and fintech businesses of Process, will become a leading online payment provider globally by payment volume. Seventh question is, which private bank partnered with Development Bank (ADB) to support supply chain finance (SCF) solution? किस बैंक ने पार्टनरशिप करी है डेवलपमेंट बैंक ADB से ताकि सप्लाई चेन फाइनेंस को टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन? कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, या यस बैंक? The right answer is IndusInd Bank. IndusInd Bank announced a strategic partnership with Asian Development Bank to support supply chain finance solution in India.
इंडसइंड बैंक ने एक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि वो सपोर्ट कर सके सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन इन इंडिया. Or the bank has entered into a partial guarantee program with Asian Development Bank with an initial outlay of $70 million exclusively towards promoting SCF, Supply Chain Finance Solutions in India. The bank recently launched a digital portal for SCF named Early Credit, which is the first public sector bank to go live which is the first public sector bank to go live on the direct tax collection systems TIN 2.0. यानी कि कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक लाइव आई है ऑन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टू टिन 2.0 पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, या थर्ड ऑप्शन कैनरा बैंक, या डी ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक? The right answer is Bank of India is the first public sector bank to go live on the direct tax collection system TIN 2.0. Bank of India has become the first public sector bank to go live on Income Tax Department new direct tax collection system TIN 2.0. With this integration, taxpayers will now get a single platform for their tax payments and the e-filing of tax returns. Taxpayers can now make direct tax payment at any branch of the Bank of India across the country. Ninth question is, which company has undertaken India's largest ever acquisition in infrastructure and materials sector by acquiring Ambuja Cements and ACC? The options are Adani Group, B option Tata Group, C option UltraTech Cement, D Vedanta. गैस करिए इसका ऑप्शन क्या होगा? किस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट को एक्वायर किया और जो इंडिया का लार्जेस्ट एक्विजिशन था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल सेक्टर में? अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, या डी ऑप्शन वेदांता? The right option is A, Adani Group. Switzerland's Holcim has completed the sale process of Ambuja Cement and ACC, which is Ambuja's subsidiary, to the Adani Group for $6.4 million, making it the second largest player. This is the largest ever acquisition by Adani and the largest ever merger and acquisition transaction in infrastructure and material space in India. UltraTech Cement is India's largest player with a market valuation of over 1.87 lakh crore. Now बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ. As of 2022, what is the average time of conclusion of corporate insolvency resolution process CIRPS in India? Average time of conclusion क्या है corporate insolvency resolution processes का इंडिया में? 2 years, 754 days, 420 days या 205 days? The right answer is 420 days, 428 days. इसका explanation. As per recent data, as many as 1,703 corporate insolvency resolution processes ended up in liquidation order till June 2022.
The processes took an average of 428 days of liquidation. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has amended regulations to allow sale of one or more assets of an entity undergoing insolvency resolution process. The amendments aim to provide better market-linked solution for stressed companies. 11th question है, which is the first public sector bank to go live on the direct tax collection system 10.2.0? The right answer is Bank of India. Now move on to question number 12. What is the upper limit of the UPI Lite payment transaction? ऑप्शन है आपके 1000 रुपीज, 500 रुपीज, 200 रुपीज या 100 रुपीज. अपर लिमिट क्या है यूपीआई लाइट पेमेंट ट्रांजैक्शन की? 200 रुपीज. The Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das recently launched 3 key digital payment initiatives at the Global FinTech Fest 2022. Or the initiative include RuPay credit card on UPI, UPI Lite, Bharat Bill Pay, cross-border bill payment through UPI Lite on BHIM App users. Users will be able to make a small value transaction in near offline mode. The upper limit of a UPI Lite payment transaction will be 200. The total limit of the UPI Lite digital payment mode on the wallet on a device would be 2000 at any point of time. थर्टीथ क्वेश्चन है, RBI's scale-based non-banking financial corporation regulation classifies NBFCs into how many layers? RBI ने NBFC regulations के अकॉर्डिंग NBFCs को कितने लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासिफाई किया है? ऑप्शंस हैं 3 लेयर्स में, 4 लेयर्स में, 5 लेयर्स या 6 लेयर्स. The right answer is 4 layers. और ये 4 लेयर्स है आपकी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. 14th क्वेश्चन है, as per the IMF's recent World Economic Outlook report, what is India's 2022-23 GDP forecast? IMF के अकॉर्डिंग 2022 और 23 में इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट क्या है? 5.8%, 6.0%, 6.8% या 7%. The right answer is 6.8%. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook report, cut the forecast for India's gross domestic product growth in financial year 2022-23 by to 6.8%. IMF flagged global inflation crisis and gave a warning of a long and tough economic winter. This is a 0.6% downgrade since July forecast, when IMF cut India's growth forecast to 7.4%. Which bank unveiled its next-gen contact center for personalized customer experience? किस बैंक ने अभी लॉन्च किया है नेक्स्ट जेन कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए? फर्स्ट ऑप्शन आपका कैनरा बैंक, सेकंड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक या फोर्थ ऑप्शन एक्सिस बैंक.
The right answer is State Bank of India. The country's largest bank, State Bank of India, has unveiled its next-gen contact center for personalized customer experience. The revamped contact center will provide over 30 banking solutions in 12 languages and will be available 24 by 7 from home. The bank has also introduced 4-digit toll-free number to simplify the process. Which payment bank has partnered with the Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) for innovations in फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? कौन सी बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप की है फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, सेकंड ऑप्शन है आपका जियो पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डी एनएसडीएल पेमेंट बैंक? द राइट ऑप्शन इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब have collaborated for innovations in financial product and services. The collaboration includes leveraging deep rural reach of IPBP, Department of Post, and enabling access to finance services to every segment of the society. IPPB shall be an active participant and partner with RBIH for its project. Now 17th question है, which public sector bank has rolled out new digital customer experience initiatives under Project Wave? ऑप्शन है आपके फर्स्ट कैनरा बैंक, सेकंड इंडियन बैंक, थर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्थ पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक ने न्यू डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट वेव स्टार्ट किया? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? द राइट आंसर इज इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो है यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ ऑनलाइन व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी थ्रू मोबाइल बैंकिंग ऐप INDOSS के थ्रू। 18th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल? कौन से इंस्टीट्यूशन ने भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नीति आयोग, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन NPCI, फोर्थ ऑप्शन आपका सेबी। द राइट आंसर इज NPCI। National Payment Corporation of India has announced the launch of the BHIM App open source license model. इस मॉडल के तहत the source code of the BHIM app will be licensed to regulate entities participating in the UPI. यानी कि जो भी ऐप का सोर्स कोड होगा वो लाइसेंस होगा to regulated entities participating in the UPI ecosystem. New feature that get launched on BHIM app in the future will also be extended to these entities. Which global index provider has recently added 6 Indian stocks to its standard index? किस ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर ने रिसेंटली 6 इंडियन स्टॉक्स ऐड किए हैं अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स में? नेस्टैक, MSCI, S&P या गोल्डमैन सैच?
The right answer is MSCI. Global index provider MSCI Morgan Stanley Capital International has added 6 Indian stocks to the MSCI Standard Index. From the Asia Pacific region, there are 48 additions and 55 deletions, and most of the changes in China. 20वां क्वेश्चन है, which bank launched the electronic bank guarantee EBG in partnership with National E-Governance Services Limited? किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की जिसकी पार्टनरशिप नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड से है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन कैनरा बैंक, तीसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक या चौथा ऑप्शन HDFC बैंक. The right answer is Canara Bank. On its founder day, Canara Bank launched an electronic bank guarantee in partnership with NeSL. Canara Bank offers an API-based digital framework of bank guarantees which will eliminate physical issuance, stamping, verification, and paper-based record maintenance of bank guarantees. This will provide sustainability and transparency. 21st question है, which institution issued guidelines regarding the execution of Demat, Debit and Pledge instruction? किस इंस्टीट्यूशन ने गाइडलाइंस इशू करी डीमैट, डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस? द राइट ऑप्शन इज सेबी. ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है, as per the recent data, what is the CPI based retail inflation recorded in India? First option है 6.25%, second option 7.2%, C option 7.41% या D option 7.91%. The right answer is 7.41%. Official data released by National Statistical Office showed that the retail inflation based on Consumer Price Index was at 7.41% in September. The figure was at 7% in August. Retail inflation rose to a 5-month high of 7.41% in September due to the costlier food item. It is 49th month in a row that retail inflation remained above the Reserve Bank of India's upper band of 6%. Twenty-third question है, Worldline, which recently partnered with NPCI, is based in which country? वर्ल्डलाइन ने जो रिसेंटली पार्टनरशिप करी NPCI के साथ, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? द राइट आंसर इज फ्रांस. French multinational payment services firm Worldline has collaborated with NPCI International Payments Limited, the global arm of National Payment Corporation of India. The tie-up aims to support Indian digital payment modes in Europe. Worldline will enable point-of-sale systems in European market to accept payments from UPI and RuPay. 24th question, which bank unveiled its next-gen contact center
for personalized customer experience? The right answer is State Bank of India. 25th question है, as per the recent data, India has how many active unicorns as of October 2022? 100 यूनिकॉर्न्स हैं, 84 यूनिकॉर्न्स हैं, 75 और 68. The right answer is 84 unicorns. 2018 से 2020 तक around 105 startup had attained unicorn status in India. Around 7 unicorns lost valuations due to investor markdowns and another 4 unicorns companies are getting acquired. Unicorn companies are those that reach a valuation of $1 billion. Now, 26th question, which public sector bank has rolled out new digital customer experience initiative under Project Wave? The right answer is Indian Bank. Public sector lender Indian Bank has rolled out 6 new digital initiatives under Project Wave for enhancing customer experience on its digital platform. Indian Bank, along with Universal Sompo General Insurance, will provide online vehicle and health insurance through mobile banking app and IND-OSs. Now 27th question, which bank topped the EASE 5.0 reform index for the first quarter of financial year 22-23? किस बैंक ने टॉप पोजीशन हासिल की ईस 5.0 रिफॉर्म इंडेक्स में? फर्स्ट ऑप्शन आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन कैनरा बैंक. द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस इंडेक्स को टॉप किया और स्टेट बैंक के पास सेकंड नंबर पे जो बैंक रही वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रही. और इस इंडेक्स के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जैसे डिजिटली एनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, modern technology capabilities, collaborative banking, and employee development and governance. Now move on to 28th question. CBIC initiatives investigations into GST evasion of rupees 23,000 crore by which companies? CBIC ने इनिशिएट्स की स्टार्ट करी इन्वेस्टिगेशंस उन कंपनीज के खिलाफ जिन्होंने जीएसटी इवेजन किया 23,000 करोड़ का. वो कौन सी कंपनीज थी? फाइनेंस कंपनीज, गेमिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या हाउसिंग कंपनीज? द राइट आंसर इज गेमिंग कंपनीज. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस and customs has initiated investigation into around 23,000 crore rupees in goods and services tax evasion by gaming companies. These companies also include online gaming companies located in India as well as in other countries. Thus, the tax evasion is related to the period between अप्रैल 2019 से लेकर नवंबर 2022 तक. What is the forecast of India's economic growth for financial year 23 as per the Asian Development Bank? 6.2%, 7%, 8% या 9.2%? कितने परसेंट फोरकास्ट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए? द राइट आंसर इज 7%.
Asian Development Bank has kept its outlook for India's economic growth unchanged at 7% for the current fiscal year. For 2023-24, the GDP growth has been kept unchanged at 7.2%. Inflation in India is still expected to rise to 6.7% in 22-23 before falling back to 5.8%. The Manila-based Asian Development Bank forecasted Asia to expand 4.2% this year. तीसरा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस टू सेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट? किस बैंक ने पार्टनरशिप की कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए? फर्स्ट है डीबीएस बैंक, दूसरा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सी कर्नाटका बैंक या डी फेडरल बैंक? द राइट आंसर इज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इससे पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने टाई अप किया था चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस से एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टू ऑफर देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। 31st क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंसाइनमेंट अंडर द India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement was flagged of which state? फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट का, वो किस स्टेट से स्टार्ट हुआ? द राइट आंसर इज तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिसंबर 2022? फर्स्ट ऑप्शन है 1.2 लाख करोड़, सेकंड ऑप्शन 1.5 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन 1.7 लाख करोड़ या डी ऑप्शन 1.8 लाख करोड़? द राइट आंसर इज 1.5 lakh crore. The gross goods and services tax (GST) revenue collected in December 2022 is rupees 1.495 lakh crore. Third question है, which Indian public sector bank received RBI approval to hold special rupee Vostro accounts of 3 banks from Sri Lanka? The right answer is Indian Bank. इंडिया बैंक को आरबीआई का नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि आप होल्ड करते स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट 3 बैंक का जो श्रीलंका में स्थित थी। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है लोकल करेंसी वुड अलाउ श्रीलंका टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया विदाउट डिपिंग इनटू इट्स डॉलर सप्लाई एज द कंट्री इज फेसिंग अ worst forex crunch. As per the World Bank's Global Economic Prospect report, what is the expected economic growth of India? World Bank Global Economic Prospect report के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023-24 में कितनी होगी? 5.5%, 6.6%, 7.0% या 7.7%? The right answer is 6.6%. In its report titled Global Economic Prospect, the World Bank said that India will be fastest growing economy among 7 largest emerging markets and developing economies. As per the report, India's economic growth will slow to 6.6%
in the next fiscal year from an unexpected 6.9% growth in the current year. Now move on to question number 35. What is the name of the entity which facilitates e-commerce sites and merchants to accept payment instrument from customers? उस एंटिटी का नाम बताना है जो हेल्प करता है ई कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट्स को पेमेंट एक्सेप्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ऑप्शंस हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स, सेकंड ऑप्शन है आपका फिनटेक कंपनीज, या सी पेमेंट कॉर्पोरेशंस, या डी ट्रांसफर एजेंट्स। The right answer is payment aggregators. और पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? वो होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ई कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। Hitachi Payment Services and BharatPe have recently received in-principle authorization from the Reserve Bank of India to operate as payment aggregators. 36 क्वेश्चन है which organization forecasted the global growth in 2023 to be 2.7%? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट की जो 2.7% होगी? फर्स्ट ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, दूसरा IMF, थर्ड ऑप्शन WEF, या डी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। द राइट आंसर इज International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund did not downgrade its forecast for 2.7% growth in 2023. IMF Managing Director said 2023 would be another tough year for the global economy. The head of the global lender noted that feared oil price spike had failed to materialize and labor markets remained strong. She also said that she did not expect another year of successive downgrade like those 7 last year. 37th question है which institution manages the national payment system in India? यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन मैनेज करता है नेशनल पेमेंट सिस्टम इंडिया के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका RBI, दूसरा ऑप्शन PFRDA, तीसरा ऑप्शन IRDAI, या फोर्थ सेबी। द राइट आंसर इज PFRDA। Pension Fund Regulatory and Development Authority manages the national payment system in India. The pension regulator has now allowed intermediaries in the pension ecosystem to adopt video-based customer identification process. Question number 38 है आपका as per the finance ministry data the Atal Pension Yojana subscribers figure crossed which milestone in 2022? अटल पेंशन योजना के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया? द राइट आंसर इज 10 मिलियन। और अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जो टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स पर। It saw the highest ever subscribers in 2022 with enrollment rising 36%. What is the deadline for banks to complete renewal of agreement for safe deposit lockers of customer? बैंक्स के लिए क्या डेडलाइन थी जो कंप्लीट करना था उनको renewal of agreement for safe deposit lockers of customer?
फर्स्ट ऑप्शन आपका दिसंबर 2022 या मार्च 2023 या दिसंबर 2023 या जनवरी 2024. द राइट आंसर इज दिसंबर 2023. The Reserve Bank of India gave banks time till end of December 2023 to complete renewal of agreements for the existing safe deposit lockers of customers. Banks were earlier required to complete the process by January 1st, 2023. The central bank has directed them to complete work in phases with milestones of 50% by June 30 and 75% by September 30. Which institution released the Stressed Asset Securitisation Framework? ऑप्शन है आपके आरबीआई, सेबी, एनएससी या नीति आयोग. द राइट आंसर इज आरबीआई. 41st क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द हर पेमेंट डिजिटल मिशन? ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन एनपीसीआई, थर्ड आरबीआई या फोर्थ फाइनेंस मिनिस्ट्री. द राइट आंसर इज आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक न्यू मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल, और ये एफर्ट है एवरी इंडियन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट, यानी कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए. और इसके लिए डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी चलाए जा रहे हैं. 42nd क्वेश्चन है विच रेगुलेटर बॉडी रिलीज प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइंस? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आरबीआई, सेकंड सेबी, थर्ड पीएफआरडीए या फोर्थ ऑप्शन आईआरडीएआई. द राइट ऑप्शन इज सेबी. सेबी जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर क्लाउड एडॉप्शन इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो एंश्योर करती हैं सेफ यूसेज ऑफ क्लाउड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड एंटिटीज and cloud service providers in the securities industry. It provides instructions on governance, risk and compliance choosing CSPs. CSPs means cloud service providers, data ownership and localization, due diligence by REs, registered entities, security controls, legal and regulatory obligations, and vendor lock-in risk. Now move on to question number 43. The Reserve Bank of India signed MOU with which country's central bank to promote innovations in financial product? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसी दूसरे कंट्री की सेंट्रल बैंक से, जिसका मोटिव है इनोवेशंस को प्रमोट करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट में. ऑप्शन है आपके यूएई, फ्रांस, श्रीलंका या बांग्लादेश. द राइट आंसर इज यूएई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट signed a MOU to enhance cooperation and jointly enable innovation in financial products and services. 44 क्वेश्चन है which department launched the AIS for taxpayer mobile app? कौन से डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर? फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फोर्थ ऑप्शन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. द राइट आंसर इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है
What is the estimated amount that the government will borrow for the first half of financial year 23-24? Estimated amount क्या है जो गवर्नमेंट बोरो कर सकती है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के? 5.5 लाख करोड़, या बी ऑप्शन 8.88 लाख करोड़, या सी ऑप्शन 11.11 लाख करोड़, या 13.33 lakh crore? The right answer is 8.88 lakh crore. The center plans to raise 8.88 lakh crore through market borrowing in April-September period of 23-24 to fund the revenue gap to push economic growth. The Finance Ministry announced this after consultation with the Reserve Bank of India. 46 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ अप्रैल 23 आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग? ऑप्शन है 6.2%, 6.5%, सी ऑप्शन 6.8%, या फोर्थ ऑप्शन 7.2%. द राइट आंसर इज 6.5%. After raising repo rate in 6 consecutive policies, the Reserve Bank of India decided to pause its rate hike cycle amid rising concern over global financial stability. The Monetary Policy Committee decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting. 47th question है, what is India's growth forecast for this financial year as per the World Bank? यानी कि इंडिया की ग्रोथ की फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर कितनी बताई है? ए 6.1%, बी 6.3%, सी 6.7%, या डी 7.2%. द राइट आंसर इज 6.3%. 48 question, which institution launched the country partnership strategy for India? कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन एडीबी, थर्ड ऑप्शन डब्ल्यूईएफ, या फोर्थ ऑप्शन आईएमएफ. द राइट आंसर इज एडीबी. The Asian Development Bank recently launched a new country partnership strategy for India. 23 से 27 तक है ये, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन इंडिया जो फोकस करेगा एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ एंड डीपनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस. 49th question है, what was the goods and services tax revenue collected in the month of May 23? ऑप्शन है आपके ₹1.17 लाख, या 1.27 लाख करोड़, या 1.37 लाख करोड़, या 1.57 लाख करोड़. द राइट आंसर इज 1.57 लाख करोड़. The goods and services tax revenue collected in the month of May 23 rose 12% on an annual basis to rupees 1.57 lakh crore. The Finance Ministry reported the GST collection for the month of April 23 at rupees 1.87 lakh crore, the highest ever. Monthly GST revenue more than rupees 1.5 lakh crore for 14 months in a row, with rupees 1.5 lakh crore crossed for the 5th time since inception of GST. Last question है आपका, Union Cabinet has approved the revival package of which company with an outlay of rupees 89,000 crore rupees? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रिवाइवल पैकेज किस कंपनी के लिए जिसका अमाउंट है 89,000 करोड़? ऑप्शन है आपके एयर इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज बीएसएनएल,
third option is Yes Bank, the fourth option IDBI Bank. The right answer is BSNL. The Union Cabinet has approved the third revival package for BSNL with a total outlay of 89,047 crore rupees. It includes an allotment of 4G and 5G spectrum for BSNL through equity infusion. The authorized capital of BSNL will be increased from 1,50,000 crore rupees to 2,10,000 crore rupees. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you. Have a nice day.